Hi guys, what's up? It's Vitasta. Welcome back to my channel. So I know I'm very late in posting this video, but ये है monthly favorites and we're talking about February favorites. As you can see, I'm dressed in all pink. वो तो अलग बात है, I was shooting for a video, but it's very apt to the month that we're talking about because February is the month of love and light. I'm here spreading it with all of you. So आप लोग सोचोगे मैं हर महीने अलग background में क्यों आ जाती हूँ? So today I'm shooting at a studio and with me are my friends, my people. तो ये मंथ कैसा गया? काफ़ी गंदा गया टू बी ऑनेस्ट. फेब्रुअरी वाज लाइक वेरी स्लो. अगर मैं आपको अपनी जर्नल दिखाऊँ जो मैं नहीं दिखाऊंगी, आई मिस्ड आउट सो मेनी डेज ऑफ वट एवर शेड्यूल आई हैड सेट इन जनवरी. एक भी चीज़ नहीं की मैंने, इतने दिन वेस्ट किए. दैट इज़ नॉट गुड. लाइक आई नीड टू speed up. Also, one of the weeks I actually injured my neck and it's really bad. It's been 3 weeks. I'm going to a physiotherapist every single day और हर सुबह मेरी जो neck है it freezes. Today also it's really bad and I literally cannot move my head. इससे ज़्यादा, like this is my limit. I don't know, but I'm here to tell you good news and stuff. So without further ado, let's start our February favorites. So सबसे पहले makeup favorites पे आते हैं. My makeup favorites are blushes. Like I love blushes. I'm gonna share with you my favorite blushes of the month. This is a Pixie on the glow blush in the shade Fleur. ये मैंने काफ़ी पहले खरीदा था. It's very pretty, very handy also. I purchased it like months ago, बहुत पहले किसी तो नायका हॉल में मैंने डाला हुआ था. But I've started using it recently. This is how it looks like. Like you can twist this thing and ये पूरा ऊपर आ जाता है. I don't want to break it, so I don't know कितना बड़ा है, but at least इतना तो होगा. Very beautiful pink color. बहुत creamy blush है. Look at the shade. Like it's so glowy, so pink and बहुत अच्छे से absorb भी हो जाता है इस तरह से. Beautiful shade. And जब ये लगाओ तो ऐसा लगता है कि इतना फ्रेशनेस आपके फेस में, या फिर आप वर्कआउट करके जो आते हो वैसे रेडनेस आ जाती है, वैसा I'm obsessed. The next blush that I really love is Simply Numb's blush. सबसे पहले तो I want to appreciate the packaging. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. आई थिंक ये काइली के ब्लशेस जैसी पैकेजिंग है थोड़ी बहुत इसकी. बहुत ही खूबसूरत ब्लश, बहुत प्यारी पैकेजिंग है इसकी. एंड माई शेड इज गर्ल नेक्स्ट डोर. इट्स अ वेलवेट क्रीम ब्लश ओनली. इट्स अ वेलवेट ब्लश. इट्स अ टेराकोटा काइंड ऑफ शेड, ऑरेंजिश है थोड़ा सा. एंड व्हेन यू अप्लाई इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक ऑरेंज पीच का मिक्स एंड इट मिक्सेस सो वेल. दिस इज द एक्चुअल शेड, very pretty, and when you like mix it just vanishes into the skin to give this natural finish. These two are the blushes that I used constantly in the past month. Definitely recommend any of these. अभी मार्च like आधा शुरू हुआ है and मुंबई अभी से उबलने लगा. I hate it too much. Skincare favorites में this time I'm gonna share with you my favorite moisturizers. See, I have realized one thing. I don't care गर्मी है या सर्दी है, but a good moisturizer is something that everyone needs. आपकी skin चाहे dry हो चाहे oily हो whatever, बट आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए बिकॉज लाइक आपके पूरा जो स्किन का हाइड्रेशन है वो मेंटेन करता है. आपकी सारी स्किन केयर जो आप लगाते हो वो लॉक कर देता है अंदर. सो दैट्स व्हाई यू नीड अ गुड मॉइस्चराइज़र एवरी टाइम. फर्स्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र इज़ फ्रॉम क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज इंटेंस. क्लिनिक का एक और मॉइस्चराइज़र आता है जेल में विच इज़ द मॉइस्चर सर्ज रिप्लेनिशर क्रीम. इट्स अ जेल फॉर्मूला बट दिस वन इज़ a cream formula. Clinique sent it to me via PR and खत्म हो गया है guys. I'm so sorry. Absolutely obsessed with it. And it's a 72-hour replenishing hydrator. That means it stays for 72 hours अगर आप फेस वॉश नहीं करते हो तो. एंड इट डज इट्स वर्क लाइक बहुत अच्छा, बहुत इंटेंस है. आई एम डेफिनेटली गोना रीपर्चेज इट. ये तो मेरा 1 month के लिए चला, सो यू कैन गेट दिस वन इफ यू वांट टू ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ. नेक्स्ट मॉइस्चराइजर इज दिस ब्रियोलिस लेबोरेटरीज का लेट क्रीम कॉन्सेंट्रेट. दिस वाज सजेस्टेड टू मी बाय भाविका एंड शी यूजेज इट ऑल द टाइम. दिस इज अ मल्टी फंक्शनल क्रीम जिसमें लाइक यू कैन यूज इट एज अ मास्क
मास्क लगा के रखें and then wipe it off. You can use it as a primer, as a makeup remover, a moisturizer of course. So yeah, there's like 4-5 things that you can use it as. And अगर आप कुछ नहीं ले जा रहे हो, like आपको makeup remove करना है या कुछ करना है, you can just take this and it will do all your jobs. This छोटा वाला I purchased to just try it out and I really like it. I'm using it every day now. Thick सा cream है, like इसकी consistency भी बहुत thick है. Since it acts like a primer, it also kind of smoothens out your skin and everything. It's not very chico and oily, but it's kind of nice. Apparently it's used by Kim Kardashian. Not that I care about them, but a lot of people around the world use it, like makeup artists use it on their clients. I think this was a good purchase and it's a very nice moisturizer. Okay, so the next part is my favorite outfits. I did not bring any because I'm at a studio. I think my favorite outfit for February, these cargo pants. Will post in an H&M haul and I will tell you all the details about it. But these pants are my savior. I have gained a little weight, so मेरा जो waist size है वो एक size और बढ़ गया है, तो उसकी वजह से my old jeans वगैरह were not fitting me, but I bought this pant and it is literally a lifesaver. You can wear it with anything, even like club wear and all. मैंने Valentine's Day पे पहना था इसको with this purple top, which is also one of my favorites. ये मैंने lavender haze वाली vibe के लिए लिया था. This is my favorite outfit of the month actually. इसमें जो pictures डाल थे they also did very good because like the whole vibe of this thing was really nice. Kind of a corset bustier top. I think it's very pretty. It's very beautiful to look at. Satin finish. Anything satin is automatically beautiful. अब आते हैं songs पे. Apart from listening to my previous playlist जो I have shared like a million times, there was nothing new as such, but there was this one song that I was obsessed with for a long time. I was playing it on repeat and I think वो मेरे Spotify rap में भी enter कर सकता है वो गाना, क्योंकि मैंने इतनी बार सुनी. मैं गाना सुनाने की जगह हम थोड़ा यहाँ डांस करके दिखाएंगे आपको for a change. So here is the song. ये जंप है. मेरे को नहीं आता भाई, मेरे तो गर्दन भी टूटी है. मैंने भी सेम ट्यूटोरियल निकाला. आगे आप पीछे नहीं ले जा रहे हैं ना आप. Thank you. हाथ कैसे है? So yeah, that was a song that I am obsessed with. Even now I'm obsessed with. कभी भी चलता है तो I like start grooving how much ever I can. Actually the whole album is amazing. I really like the other songs also. So next, coming to the last section, that is my favorite shows. So I've watched Modern Family, as I said. I watch it every day, but I also started watching new shows. So I heard about this show called Farzi on Amazon Prime जिसमें शाहिद कपूर है. I watched it like in a single day. It was so interesting. I was on the edge of my seat starting से लेके ending तक. It keeps you hooked. बहुत ज़्यादा amazing show है. ऊपर से अगर प्लॉट बताना हो तो उसमें ये है कि शाहिद कपूर and his friend are like poor, they are short of money and they have to save their grandfather's printing press. तो उसके लिए they start making fake notes, fake करेंसी वो बनाने लगते हैं एंड इट्स सो परफेक्ट दैट कोई इनको पकड़ नहीं पाता है. लाइक इतनी परफेक्ट करेंसी ये करते करते छोटा मोटा धंधा करते हैं, वो एक बड़े रैकेट में फंस जाते हैं. फेक करेंसी का बड़ा रैकेट जो टेररिज्म तक इन्वॉल्व हो जाता है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. देयर स्टोरी लाइक हाउ दे गो अबाउट इट एंड स्टफ. आई नो इट साउंड्स नथिंग लाइक आई वुड वॉच पर्सनली, बट मैंने एक बार देखा बिकॉज एवरीवन वाज सजेस्टिंग इट. देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया. आई थिंक यू ऑल शुड ऑल्सो वॉच इट बिकॉज इट्स लाइक fun. Next show that I really like is my favorite every year और मैं कभी ना कभी बोलती हूँ इस बारे में. It was You, not You. So You season 4 came and it went. 2 parts में आया था. I think 5 and 5 के episodes में. I watched the first part. A little boring because Joe का पूरा life जो है it has shifted to London and there was so many things, so many new characters. Like everyone was new except for Joe. And it was a little boring to catch up with all of that. Technically उसका जो part 2 है वो March में आया है, but I will count it in February favorites. And that blew my mind.
पॉइंट. अगर आपको फर्स्ट पार्ट बोरिंग लग रहा है तो प्लीज वेट टिल द सेकंड पार्ट बिकॉज इट इज सो गुड. नो स्पॉयलर्स, आई एम नॉट गिविंग एनी spoilers, but the end really shook me to my core. I got a nostalgia of watching the season for the first time, like the first time I watched EU season 1. It really gives us an insight about how Joe is really a psychopath. I know Penn Badgley इस मिशन पे जा चुका है बिकॉज ही हेट्स दैट पीपल एक्चुअली सिंपथाइज विद जो एंड दे लाइक हिम. इवन आई डू समटाइम्स, बट दिस शो कम्प्लीटली चेंज्ड द पर्सपेक्टिव. लाइक विलन है वो बंदा, इज एन एंटी हीरो, वो एंटी हीरो ही रहेगा. लेटली आई एम वॉचिंग होम टाउन चा 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 बिकॉज थोड़ा सा लाइफ में यू नो चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस मुझे चाहिए था फिलहाल. सो उसका जो रिव्यू वगैरह है दैट आई विल गिव यू नेक्स्ट मंथ. दिस मंथ आई एम ऑल्सो गोइंग ऑन अ ट्रिप, so that I will reveal to you later. I know this video is posted very late, but please don't mind. I will get on time once I'm back in my house. Like I know I've been everywhere. Please forgive me for that, but at least I'm posting this. So वो थोड़ा सा consider करके, if you like this video, then please leave a like and a comment below about whatever you feel like, whatever you have tried among all these things, and what are your favorite songs and favorite shows of the month. बाकी तो कुछ नहीं guys. Thank you so much for watching. I will see you next time. Till then, take care. Bye.